Last lecture से कोई question? No, sir. Okay, so basically we were discussing the synthesis of nitric acid, and nitric acid is formed from ammonia and air. So from this line, ammonia gas, and from this green line, compressed air. Both the reactants go into the reactor, which is an oxidation or converter reactor. This reactor has two parts, uh, and the two parts are basically divided by this dashed line. In this section, the main reaction takes place, while in this section, we try to reduce the temperature of our product species. So, in this section, the reaction section, we have a catalyst which is composed of 90% platinum and 10% rhodium, and it is formed in the form of Y-gauze, as you can see in the diagram. So the temperature required here is 1380 to 1470 degree Fahrenheit, and in some literature, the maximum temperature 1600 degree Fahrenheit is also reported. So at these conditions and in the presence of catalyst, the reactants follow this first reaction, and as a result, ammonia is oxidized into nitrous oxide and nitric oxide and water. If we are unable to control the reaction conditions, we have poor control on the reactor, then these side reactions can also take place. As a result, ammonia will be oxidized to nitrogen and nitrous oxide as well. Usually, in the presence of the catalyst, if we do not get the required temperature range in the reactor, rather we have lower temperature than the required reaction temperature, then reaction number 2 and 3 are favored. And if the temperature of the reactor is in the desired range, then the reaction number 1, this reaction is favored. If we have good control, the yield in this converter is 93 to 98%. Secondly, air impurities in air or in ammonia, they can also damage the catalyst. And if the catalyst gets damaged, obviously the yield uh, will be low. And if the distribution of the reactant gases, ammonia and air, if this distribution over and if the distribution of these gases over the catalyst is not uniform, again we will get low yield. So these are some points which we need to take care about so that we can have maximum yield in the reactor. Then the product species from the reaction section goes into the heat exchange section of the reactor, which is this load section of the reactor. The temperature of the product species are reduced in two steps. Firstly, in this superheater, and then in this heat recovery boiler. So from this line, water goes into the load section of the reactor. Firstly, it passes through this heat recovery boiler where where it gets the heat from the product species, and then the same water goes into the superheater where again it will get the heat from the product species. After passing through these two heat exchangers, this water will be converted into a steam of very high energy content, which then this steam can be used either in the process or we can send it onto the turbine section where it will run a turbine. As a result, electricity will be produced. After giving its energy to the turbine, the steam will condense into the liquid water. And this is the liquid water, which is again used
for heat exchange in the load section of the ammonia oxidation reactor. So in this way, this cycle will work on continuous basis. So any question regarding ammonia oxidation reactor? जी क्लास कोई क्वेश्चन? No, sir. Okay, okay. So the product species or the product stream after exchanging the heat with water, it directly goes firstly into a catalyst filter because the temperature is high in the reaction section, and obviously a gas when it has a high temperature its pressure will also be high, so there is a chance that this product stream may trap some catalyst particles in it. So in order to remove those catalyst particle, firstly we pass this product stream through a catalyst filter. The job of this filter is to retain the catalyst particles while the clean gas, product gas, moves on to the next step, where firstly it will exchange the heat with this stream, then it will further exchange the heat with this stream, and then it goes into the diluter where we will shower water, and we can get a very low concentrated nitric acid here, as you can see, up to 9 to 10% concentration. So it's a very low concentration nitric acid. It depends on the market. If the customer demands that he needs a nitric acid having 9 to 10% concentration, then we can provide him with this concentration. And if the demand is high, the customer wants a highly concentrated nitric acid, then instead of this diluter, we will directly introduce this stream into the absorption column, which is this one. ठीक है, तो जो प्रोडक्ट स्ट्रीम है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर है, गैस का टेम्परेचर हाई हो तो प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो वो कुछ कैटलिस्ट पार्टिकल्स को इंट्रैप कर सकती है। उन कैटलिस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए एक कैटलिस्ट फिल्टर है जो कैटलिस्ट पार्टिकल को रिटेन करेगा, और क्लीन प्रोडक्ट गैस जो है वो फिर दो हीट एक्सचेंजर में से पास होती हुई डाइल्यूटर में जाएगी। तो डाइल्यूटर में हम वाटर शॉवर करते हैं, और इस वाटर मिक्सिंग से हमें वीक नाइट्रिक एसिड मिलता है, नाइट्रिक एसिड विच हैज वेरी लो कंसंट्रेशन, तो अप टू 9 to 10%। अगर कस्टमर डिमांड हो कि उसको इस कंसंट्रेशन का चाहिए तो हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं। अगर कस्टमर की डिमांड नहीं है तो फिर हम गैसेस को डायरेक्टली इस पॉइंट से ये डाइल्यूटर नहीं होगा, डायरेक्टली उसको इस पॉइंट से अब्जॉर्प्शन कॉलम में इंट्रोड्यूस करवा देंगे। और जब हम एब्जॉर्प्शन कॉलम में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो साथ में एयर मिक्स करेंगे। ठीक है, इफ कस्टमर वांट्स high concentration of nitric acid, then instead of sending these product gases into the diluter, we will send these gases into the absorption gases along with some amount of air. ठीक है, at the same time in this absorption column we will introduce water from the top of the column. So uh, as we know that ammonia oxidation converted ammonia gas into nitric oxide NO. So this product stream mainly will have NO, nitric oxide. So when it will combine with air, when nitric oxide will combine with air in the absorption column,
where temperature is 100 degree F and pressure is 116 psi A. At these conditions, nitric oxide will react with oxygen present in air to form nitrogen dioxide and dinitrogen tetroxide. So when we will combine nitric oxide with air in this absorption column, NO will be converted into NO2 and N2O4. This, this downcoming water will absorb NO2 and N2O4 and will convert these gases into nitric acid having a concentration of 57 to 60%. फिर ये जो डाउनकमिंग वाटर है ये NO2 और N2O4 के साथ रिएक्ट करता है and it form nitric acid. So the nitric acid formed here is up to 57 to 60% concentrated. The gases which were unable to get absorbed in water, they leave the absorption tower from the top. Then they exchange heat with the product stream coming out from the reactor. And then we add these gases into expander where we reduce the pressure of the tail gases, and then these tail gases are exhausted into the atmosphere. So any question till now? सही आखिरी पॉइंट फिर एक्सप्लेन कर दें। Absorption column? सर अनडिसॉल्वेबल गैसेस वाला थोड़ा Absorption column की बात कर रहे हैं या टेल गैसेस की? अनडिसॉल्वेबल गैसेस वाला। ओके, सो जो गैसेस पहले तो पर्पस समझ लेना absorption column का। ये जो मेन प्रोडक्ट स्ट्रीम है जो रिएक्टर से आती है, कैटलिस्ट से पास होती है, फिर दो एक्सचेंजर से पास होती है। अगर तो कस्टमर की डिमांड हो कि उसे बहुत लो कंसंट्रेशन का नाइट्रिक एसिड चाहिए तो हम उसको डाइल्यूटर में से पास करते हैं और 9 to 10% कंसंट्रेटेड एसिड बनाते हैं। अगर कस्टमर की ये डिमांड नहीं होती तो हम इन गैसेस को डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन कॉलम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर ये डाइल्यूटर नहीं होगा। ओके, जब NO जो मेन प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट स्ट्रीम है, जब वो एब्जॉर्प्शन कॉलम में ऐड होती है तो हम उसमें एयर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एयर मिक्स क्यों कर रहे हैं? ताकि हम NO को NO2 और N2O4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकें। तो एयर और NO रिएक्ट करेंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनेगा। इसी एब्जॉर्प्शन कॉलम में हम टॉप से वाटर इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा फॉलोइंग दीज रिएक्शंस और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। वो जो नाइट्रिक एसिड है वो कॉलम को बॉटम से लीव करेगा और अब उसकी कंसेंट्रेशन 57 to 60% होगी। और जो गैसेस एब्जॉर्ब नहीं हो सकी होंगी वाटर में, वो एज टेल गैस के टैग से एब्जॉर्प्शन कॉलम के टॉप से लीव करेंगी, जिसको पहले हम हीट एक्सचेंज करवाते हैं इस प्रोडक्ट स्ट्रीम के साथ, जिससे प्रोडक्ट स्ट्रीम का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। और फिर हम इस टेल गैस को एक एक्सपेंडर में भेजते हैं क्योंकि इनका प्रेशर हाई है, तो इसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं इन एक्सपेंडर और फिर एट लो प्रेशर इसको एग्जॉस्ट कर देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। जी कोई और क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम इन गैसेस को हाई प्रेशर पे एग्जॉस्ट करें तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट पे? देखो, हाई प्रेशर का मतलब होता है कि हमने इन गैसेस को खुद से एनर्जी दी थी, तभी इन गैसेस के पास हाई प्रेशर आया ना। तो अगर गैसेस को हाई प्रेशर में ही एनवायरनमेंट में भेज दूंगा तो जो गैस का प्रेशर हाई करने पे मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है
जैसे मैंने किसी कंप्रेसर से पास करके उसको हाई एनर्जी दी होगी। तो अगर एज एज इट इज हाई प्रेशर पे एग्जॉस्ट करूंगा तो वो एनर्जी को वेस्ट कर दूंगा, वो पैसा मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए मैं टेल गैसेस को एक एक्सपेंडर में भेजता हूँ। एक्सपेंडर में इनके प्रेशर, एक्सपेंडर जो होता है वो गैसेस को एक्सपैंड करता है, यस जिससे सर। गैसेस का प्रेशर लो हो जाता है। तो ये बिल्कुल टरबाइन की तरह का ही होता है। ठीक है। सो जब मैं हाई प्रेशर गैस को कन्वर्ट करता हूँ इनटू ए लो प्रेशर गैस बाय पासिंग इट थ्रू एन एक्सपेंडर, तो बेसिकली मैं गैस की प्रेशर एनर्जी को एक मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर कर देता हूँ। और वो मैकेनिकल वर्क जो है वो एक यूजफुल फॉर्म है एनर्जी की, जिसको मैं प्लांट में कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। सर ये जो टेल गैसेस हैं हमारे पास, इनका कंपोजिशन क्या है? टेल गैसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, वाटर और वेपर्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, वो नाइट्रोजन जो एयर के साथ आ रही है, सम अनरिएक्टेड अमोनिया, NO हो सकती है, NO2 N2O4, ये सब कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट नहीं होता। तो लाइक सारी गैसेस वाटर में एब्जॉर्ब नहीं होंगी, सारी N2O और N2O4 में, NO2 और N2O4 में कन्वर्ट नहीं होंगी। तो इनएफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, इसकी वजह से कुछ गैसेस एज एज इट इज रहती हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो फिर टेल गैसेस के फॉर्म में लीव करती हैं। सर तो देखें, हमने अमोनिया के ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो अगर हम टेल गैसेस को ऐसे ही लीव कर देते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये तो फिर अनइकोनॉमिकल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? जब हम 100% एफिशिएंसी की तरफ जाएंगे, यानी कि 100% रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, 100% कोई प्रोडक्ट जो है वो वाटर में एब्जॉर्ब हो, तो इस 100% को अचीव करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड इज वेरी लार्ज। वो टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम दोनों सिचुएशन को कंपेयर करते हैं कि यार 100% करते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा चाहिए, या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं 97-98% और टाइम बहुत कम चाहिए, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें इकोनॉमिकल जो फिजिबल सोल्यूशन नज़र आता है वो यही है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और हम अपनी एफिशिएंसी को 97-98% पर रखें, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा के 100% लें। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली अपना रोल प्ले करती है और वो फिर आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सही सर। जी, कोई और क्वेश्चन? सर हमने 2 गैस हीटर भी लगवाए हैं। 2 गैस गैस हीटर्स, ये टेल गैस हीटर जो लगे हैं। नहीं, टेल गैस हीटर बेटा एक ही है, वो यहाँ से पास हो रही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट गैस है इसने रिएक्टर के बाद एब्जॉर्प्शन में जाना है, और एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, 100 डिग्री फ़ारेनहीट, और रिएक्टर में जो टेम्परेचर था वो 1380 से 1470 डिग्री फ़ारेनहीट था। सो इसलिए हम इस हीट एक्सचेंज से प्रोडक्ट गैस के टेम्परेचर को कम करते हैं और टेल गैस के टेम्परेचर को थोड़ा रेज कर देते हैं, ताकि प्रोडक्ट गैस रिक्वायर एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है जी। सर इसके आगे स्टीम इकोनोमाइजर भी तो लगा ना, ये दोनों सेम ही है ना? नहीं नहीं, इसमें ये टेल गैस हीटर में हीट एक्सचेंज हो रहा है टेल गैस और प्रोडक्ट स्टीम के दरमियान। इसमें हीट एक्सचेंज हो रहा है प्रोडक्ट स्ट्रीम और वाटर के दरमियान, जिस वाटर ने आगे रिएक्टर में जाके स्टीम में कन्वर्ट होना। ओके सर। जी, क्लास इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? नो सर। चलें, so this is the flow sheet for the
synthesis of weak nitric acid, which is having a concentration of 57 to 60%. The next part is the conversion of this weak nitric acid into a highly strength or highly concentrated nitric acid, having a concentration up to 98 to 99%. So this process takes place in these steps. That firstly, weak nitric acid is passed through a dehydrating column where we will add concentrated sulfuric acid, and as we all know that sulfuric acid is a very good dehydrating agent. So this sulfuric acid will absorb the water content of this weak nitric acid and will convert this nitric acid into a 99% concentrated nitric acid. In doing so, some decomposition of nitric acid may take place, and as a result, we can have NO2 or O2 or even NO as well here. So, the nitric acid, the stream which leaves the dehydrating column through this line, it will have nitric acid vapors along with uh, some uh, some gases which are formed from the decomposition of nitric acid like NO2, NO, and O2, etc. So this mixture goes into a bleacher and condenser. If we feel that the nitric acid has some color, so we will add a bleaching agent which will remove the color of the nitric acid. At the same time, we will also add water, and water will absorb this vapor of nitric acid, and as a result we will have uh, 99% concentrated strong nitric acid, while the decomposed gases which we get from the decomposition of water, they are sent into the absorption column where we will add air, and if there is NO, then air will convert NO into NO2 and N2O4, and if we have NO2 or N2O4, then we will add water, which is not mentioned here. The water will absorb NO2 and N2O4 and will produce a dilute nitric acid, and the gases which are not absorbed in water, they leave the column from the top, while the dilute nitric acid formed here can be sent at the start of the dehydrating column, from where it will be converted into a highly concentrated nitric acid. So this is a brief diagram of the conversion of weak nitric acid into strong nitric acid. Any question? सर ये ब्लीचर ऐड करने से नाइट्रिक एसिड जो है उसकी कंपोजिशन पे तो फर्क पड़ता होगा ना? नहीं नो के ब्लीचर जो ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली उन चीज़ों के साथ रिएक्ट करते हैं जो कलर इम्पार्टिंग होते हैं और मेन स्ट्रीम के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के अगर आपको यूजेस याद हो जो मैंने लास्ट टाइम बताए थे लेक्चर में, तो बड़े सोफिस्टिकेटेड केमिकल्स में ये यूज़ होता है, तो वहाँ पे हमें नाइट्रिक एसिड की तरफ से कोई इम्प्योरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इम्प्योरिटी होगी तो वो कुछ और तरह के रिएक्शंस को फॉलो कर सकती है। सो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए ये डिसीजन होता है कि ब्लीचिंग एजेंट का यूज़ करके हम इसके कलर को रिमूव कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना होता हुआ तो यहाँ पे टेक्निकली फिर ब्लीचिंग हम कर ही नहीं सकते। ओके सर। जी, कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास? सर ये रिपीट कर दें एक दफा। क्या रिपीट कर दूं? सर ये ब्लीचर और कंडेंसर वाला पार्ट। अगर हमें फील हो कि नाइट्रिक एसिड में कलर्स है तो हम ब्लीचिंग एजेंट ऐड करते हैं जो नाइट्रिक एसिड के इस कलर को रिमूव करेगा, और सेम टाइम हम कूलिंग वाटर को यूज़ करते हैं
जो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को लिक्विड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसकी कंसंट्रेशन 99% होती है। इस पॉइंट तक हम नाइट्रिक एसिड के कलर को भी रिमूव कर गए होते हैं और नाइट्रिक एसिड को बाकी गैसेस से सेपरेट भी कर गए होते हैं, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड आ गया और ये गैसेस फॉर्म में कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स को हम एब्जॉर्प्शन कॉलम में भेजते हैं, जिसमें हम एयर और एक वाटर लाइन जो कि यहाँ पे शो नहीं हुई वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगर इन गैसेस में NO हो तो एयर या ऑक्सीजन NO को NO2 और N2O4 में कन्वर्ट करती है। NO2 और N2O4 बन गए तो वाटर इन NO2 और N2O4 को अब्जॉर्ब करके एक डाइल्यूट या वीक नाइट्रिक एसिड बनाता है। इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम दोबारा डिहाइड्रेटिंग कॉलम के इनपुट पे भेज देते हैं और जो गैसेस एब्जॉर्ब नहीं हो पाती वाटर में वो टॉप से कॉलम के लीव कर जाती हैं। ठीक है जी। जी सर। जी स्क्रीन शेयर्ड है। यस। Okay जी, acid industry ends here. We basically saw the synthesis of four acids: sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid, and phosphoric acid. Now we are moving towards the ammonia industry, and we will see the synthesis of ammonia gas. So what is ammonia? Ammonia is a compound which is made from nitrogen and hydrogen. At standard or normal temperature and pressure, ammonia is present in the form of a gas. By nature, it is very toxic and corrosive, and it has a pungent smell. Commercially, we can have an anhydrous ammonia with zero water, or we can have an aqueous solution of ammonia, which is also known as ammonium hydroxide. And we need to store ammonia gas uh, uh, or ammonium hydroxide under pressure or at low temperature so that it can remain in liquid state. Otherwise, ammonia is a very volatile compound uh, even at normal temperature and pressure. So if we do not keep the temperature low enough or pressure high enough, then this liquid ammonia will easily convert into gaseous ammonia. And in terms of control, it is difficult to control gases and it is easier to control liquids. Now it has plenty of uses. It can be used in the manufacturing of some important fertilizers like urea and ammonium nitrate. It can also be used as a fertilizer. यानी कि ammonia we can also use as a fertilizer by mixing ammonia in water and then showering this ammonia onto the plants. But again, it is not a very feasible or practical approach by showering ammonia solution on plants as a fertilizer, because ammonia vaporizes or volatilizes instantaneously. So the loss of ammonia is huge when we use it as a fertilizer. So most of the time we basically convert ammonia into other forms of fertilizer like urea and ammonium nitrate. The second important use of ammonia is in the production of nitric acid, which we just discussed. The third important use of ammonia is as refrigerant because it has a very good thermodynamical properties, and it can be liquefied very easily under pressure. But because of its adverse effects like pungent smell, like toxic and corrosive nature, now ammonia is replaced by haloalkanes as a refrigerant. We can use ammonia in the formation of the disinfectant chloramines, which is used to treat wastewater. And we can also use ammonia in the manufacturing of certain compounds like hydrogen cyanide and certain explosives. So you can see
by its use that ammonia has plenty of use in the industry, and in the economy the synthesis of ammonia factor, it is also very important. The most famous process for the manufacturing of ammonia is the Kellogg's process. And Kellogg's process basically uses a hydrocarbon as a source of hydrogen and air as a source of nitrogen. And then this nitrogen and hydrogen combines to form ammonia gas. So depending upon a country or the results of the hydrocarbons in the country, like in Pakistan, we have natural gas as the most abundant hydrocarbon available naturally. So we will use natural gas as a hydrocarbon in Kellogg process, while other countries can have different hydrocarbon depending upon the availability of the resource. So firstly, the hydrocarbon, or as in this case natural gas, is passed through a desulfurization step where we remove the sulfur compounds or sulfur present in hydrocarbon from it. The removal of sulfur is important because it can damage the catalyst which are used in the later steps. So we basically use two step here, hydrogenation and absorption, and as a result of hydrogenation and absorption, the natural gas desulfurization takes place and sulfur is removed from the natural gas. Then the desulfurized natural gas is sent into a primary reformer. This is the first reactor where we try to convert uh, methane into a mixture of carbon monoxide, hydrogen and carbon dioxide. डिटेल रिएक्शंस आगे जब पीएफटी में जाऊंगा वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा. So maximum conversion or reforming of natural gas takes place in the primary step up to 85% with the help of steam, which gives us the energy, and the remaining uh, conversion of the methane means up to 85% methane is converted here and remaining 15% is converted in secondary reformer. So in secondary reformer, the remaining natural gas is converted into a mixture of carbon monoxide, hydrogen and carbon dioxide with the help of air and power. Then the product stream goes into the shift conversion, where the objective is to convert CO into CO2. CO formed in primary and secondary steps, it is basically converted into CO2 in shift conversion. Because it is easy to remove, it is easy to separate CO2 than CO from the our main product. क्योंकि CO2 को remove करना आसान है than CO. That is why we convert all the CO present in the product stream in shift conversion into CO2. Okay. In CO2 removal, we remove all the CO2, and in methanation step, uh, the minute amounts of CO and CO2 which we were unable to remove, they are converted into the methane. Why we are converting CO and CO2 in methane? Because methane has no adverse effect onto the catalyst which is used in the ammonia synthesis step. So remaining amount of CO and CO2 are converted into methane in methanation step. Then we compress the gases and send them on into the ammonia synthesis step, where nitrogen and hydrogen combines to form ammonia gas. And after the formation of ammonia, we send it towards the storage or warehouses. So this is the brief description about the blow flow diagram of Kellogg's process. Now let's see the PFT of the Kellogg's process. So this is the hydrocarbon source, naphtha or natural gas. Firstly, the source is sent into a desulfurizing unit
where the objective is to remove sulfur or sulfur containing compounds. Now, desulfurization of the hydrocarbons takes place in two steps. In the first step, we basically hydrogenate sulfur compounds. This is the hydrocarbon which has sulfur. So we react this hydrocarbon having sulfur with hydrogen. As a result, this sulfur is converted into hydrogen sulfide. So this is the first step, hydrogenation of the sulfur compounds. Now, this hydrogenation reaction takes place at 350 to 400 degrees C in a presence of a catalyst, cobalt molybdenum based catalyst. This is the first step in which sulfur is converted into hydrogen sulfide. Then this hydrogen sulfide is adsorbed onto a zinc sulfide bed. After the absorption, the bed takes all the sulfur. As a result, the sulfur is removed from the हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो जो डीसल्फराइजेशन है हाइड्रोकार्बन की वो दो स्टेप में होती है. पहले स्टेप में जो सल्फर कंपाउंड है उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं बाय रिएक्टिंग दी हाइड्रोकार्बन विद हाइड्रोजन. ये रिएक्शन होगा 350 से 400 डिग्री सी में इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट मोलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट. As a result of hydrogenation, we will have hydrogen sulfide. Then this hydrogen sulfide इसको हम adsorb कर देते हैं onto zinc oxide bed. तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड जिंक ऑक्साइड बेड के साथ इंटरेक्ट करती है तो इट फॉर्म्स जिंक सल्फाइड बेड. और जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है नाउ इट विल नॉट हैव एनी सल्फर और सल्फर कंपाउंड इन इट. So this is how in two steps, hydrogenation and desulfurization, hydrogenation and adsorption, the desulfurization of feedstock or of hydrocarbon takes place. So in this block, we basically desulfurize the natural gas or the hydrocarbon, जो अभी process explain किया उसमें. Then this desulfurized natural gas or hydrocarbon goes into this primary reformer, where this hydrocarbon is reacted with steam. Steam is coming from this line. Okay? So from this line, steam goes into the primary reformer, and from this line, natural gas or hydrocarbon goes into the primary. Now in primary reformer, both reactants combine. The temperature required here is 500 to 600 degrees C. The primary reformer has tubes in it. It's a vessel which has tubes in it, and these tubes are filled with nickel reforming catalyst. Okay? The tubes are made of nickel chromium alloy. The material of construction of these tubes is nickel chromium alloy, and the catalyst present in these tubes is nickel reforming catalyst. So in the presence of this catalyst and in this temperature range, hydrocarbon and steam, natural gas and steam reacts to form carbon monoxide and hydrogen gas. Carbon monoxide may react with steam to form carbon dioxide and hydrogen gas. So whatever amount we are entering of methane, 85% up to 85% of methane is converted into CO2 and hydrogen in primary reformer, while the remaining 15% of methane is converted into CO2 and H2 in secondary reformer because of equilibrium limitations. So जब मीथेन और नेचुरल गैस प्राइमरी रिफॉर्मर में आते हैं तो उसमें हमने रिफॉर्मिंग रिएक्शन करना होता है, और इस रिफॉर्मिंग रिएक्शन के लिए वी नीड दिस टेम्परेचर रेंज 500 टू 600 डिग्री सी. और इस रिफॉर्मर के अंदर ट्यूब्स होती हैं जो कि निकल क्रोमियम एलॉय की बनी होती है, और इन ट्यूब्स में निकल रिफॉर्मिंग कैटलिस्ट होता है.
So in presence of this catalyst or इस temperature range पे मीथेन स्टीम से रिएक्ट करती है and it forms carbon monoxide and hydrogen, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्टीम से रिएक्ट करता है to form carbon dioxide and hydrogen. So this is how this process takes place in primary reformer. अब ये जो रिएक्शन होते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, और अगर हम इस एक्सोथर्मिक नेचर की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको रिमूव नहीं करते तो ये हीट इतनी ज़्यादा है कि ये हमारे रिएक्टर को मेल्ट कर देती है। ठीक है, तो चूंकि प्राइमरी रिफॉर्मर में जो रिएक्शन है उसकी हीट बहुत ज़्यादा है, सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट हीट we basically circulate water from the other section of the reformer. This water absorbs the heat and converts itself into steam. This steam is then sent into the steam drum, and the same steam can be used as a reactor in the primary reformer, or it can be sent on any other section of the plant जो भी उसका use होगा उसके accordingly. So this is the whole operation of primary reformer. Any question regarding this point? प्राइमरी रिफॉर्मर के ऑपरेशन से कोई क्वेश्चन? No, sir. Okay, so up to 85% of this Excuse me, methane. जी सर ये जो राइट साइड पे एरोज हैं ये कहाँ जाएंगे आप? कौन से एरो? ये वाले एरोज कह रहे हो? जी सर। ये मैंने वो कहा ना जो रिफॉर्मर है उसके अंदर ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स में कैटलिस्ट है, तो यहाँ पे बेसिकली वो आपको वो शो करना चाह रहा है कि यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हुए, रिएक्टेंट कंबाइन होने के बाद ट्यूब्स में जा रहे हैं, बस एक डायग्राम के तौर पे उसने शो किया हुआ। ओके सर। So 85% of this methane entering into reformer, primary reformer is converted into CO, CO2 and H2, while remaining unreacted methane, it goes into the secondary reformer, where this 15% remaining methane is converted into CO, CO2 and H2. So in secondary reformer, we basically as you can see in the diagram, we also introduced air. This is the process stream and this is the air stream. So we are entering air here so that we can combust hydrogen, which is formed in this primary reformer step. Not all of it, some amount of this hydrogen. As a result, we will have nitrogen, steam and a huge amount of energy. This amount of energy which is generated from the combustion of hydrogen, it is basically consumed by the remaining unreacted methane